session 5, second part. In this part of the session, we'll discuss about how to declare functions, and we'll discuss more about classes. So, here you see public function. Now what I want to do, I want to change the action page. What I want to perform here is this action is $action. Okay. Now, in the same manner, suppose you want to check the action page. So here we have instead of change, you can put here show, and instead of this, here you can put echo this. That's it. Okay. अब अगर हम बात करें तो किसी भी फॉर्म के अंदर हम ये नहीं चाहते कि केवल एक्शन पेज और केवल उसका मेथड ही डिफाइन हो, उसके अलावा हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी क्रिएट आवर ओन वेरिएबल्स हियर. मींस फॉर्म के अंदर सबमिट क्या क्या चीजें होनी है. ठीक है, आई एम जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग दिस जस्ट टू गिव अ कॉम्पैक्ट लुक. ओके. फॉर्म के अंदर क्या क्या एक्शन होने हैं, मीन्स कौन कौन से फील्ड्स आएंगे, किस तरीके से फॉर्म डिस्प्ले होगा, दैट वी आल्सो वांट टू डिफाइन. दैट मीन्स वी वांट टू ऐड फील्ड्स हियर. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, add field. Then add field किस टाइप का हो सकता है. सबसे पहले फील्ड का कैप्शन क्या होगा, so that will be taken in caption variable. Then फील्ड का इंटरनल नाम क्या होगा, that will be taken as name variable. And third thing is type. We can define a default type here, like जैसे किसी भी फॉर्म के लिए by default जो टाइप होता है that is text. So we can define here text. Means if user is not defining this part, this will automatically be treated like text. Okay. Now array के अंदर append करना है क्या चीज, $this का फील्ड टाइप एरे. एंड इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, we have to add the type like $type. Okay. In the same manner, $this append field name, and it is $name, and $this append field caption, and it is $caption. Okay. क्वेश्चन उठता है कि ये इतनी सारी चीजें ऐड करने का फायदा क्या है जब तक कि हम इनको डिस्प्ले नहीं करेंगे. That means we have to display this.
we have to produce the form. अभी तक तो हमने केवल इनपुट्स लिए हैं यूजर से, अब हमारी आउटपुट देने की बारी है. So for this output, what we have to do? Public function display. Okay. In display part, what we have to do? First, we have to check that there is a field or not. So for what we can do, we can just count them. Count dollar this के अंदर field type. You can count any of these field variables. Either you can put here not equal to 0 or you can leave it blank, because if any non-zero value comes, it will automatically treats it as true. Okay, so I am just displaying here that you have some fields defined, and in case of else, please define a field for the form. Okay, what I am doing is I am not creating any complete application, I am just displaying this error. Okay, now in demo class, what we have to do? Just call here dollar frm का display function. Okay, now come to your web browser. In this web browser, when I have refreshed, you can see here you have defined some fields. Okay, now we haven't defined it, but still it is saying so. क्वेश्चन उठता है, इसको ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है? Because when we have started, we have defined 3 blank values, so it is confused here that those 3 values are 1 inputs. Okay, so हमने इस वैल्यू को चेंज कर दिया. हमने कहा कि इसको चेक कर लेते हैं. when it is not equal to 1, then only we should display the error. And here you can see it is saying please define a field for the form. Okay, now come back to the form. अब हमें क्या करना है? हमें ये if else वाले स्टेटमेंट्स तो नहीं प्रिंट कराने थे, हमें फॉर्म चाहिए था. सो सबसे पहले फॉर्म के अंदर जो जो चीजें आप दिखाना चाहते हैं वो डिस्प्ले कर लें. ऊपर के फंक्शंस के हेल्प से आप कैप्शन, देन वेरिएबल नेम, ये सब चीजें दिखा दें. इसके बाद आए इस फंक्शन के पास. If some fields are defined, then what is to be done? We should echo form tag. And then in this form tag, we have to define
dollar this method. Then action page, dollar this action. Okay, and then tag close. Now in second statement we have to mention about a table. It depends on you that how you want to display the form. I just want to show it in tabular manner, and that's why I have defined here a table. And here I am giving a form name. Okay, so फॉर्म नेम जो आप देना चाहते हैं, पहली लाइन के अंदर हमें, क्योंकि दो कॉलम्स मर्ज करने हैं, so I am putting here call span equal to 2. Okay, and here you can define the form name. So if you want to give the form name, you have to put here an additional variable like private dollar name and initially form 1. Okay, so by default it will be named as form 1. Okay, and if you want to change the name, just change here the variable names like and if you want to show the name, then in this echo part also you have to change here name. Come to the lower side, and here you can put the form name whatever you have defined. Dollar this name. Okay, now create another table row, and here what you have to do is you have to print the caption of the field and then corresponding tag for the field. Okay, so here dollar field underscore name field underscore caption $i. This should be like dollar this field underscore caption का $i slash td, then again td, and in this table data what you have to do, input type equal to whatever the field type you have selected, like dollar this
field underscore type $i dot name, and whatever name you want to give, because this name is mandatory. Remember, whenever you want to concatenate two strings, you have to put dot sign. Okay. Now, so in this way you can see what we have done is we have defined here input type, and here we have defined the variable name. Okay, we have to execute this line for each and every part of this array. So here we have to define a for loop for $i equal to 1 to $i less than count $this and $i plus plus. And you can put your slash in, and at the end just put your echo slash form, and before that just in the table also. Now here what we have created the form as we create it in HTML, but what we have made the changes is we have taken everything from the user. Now अब देखिए इस क्लास का यूज क्या है। जब कोई प्रोग्रामर आपका कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहता है तो किसी भी फॉर्म के लिए उसको बड़े बड़े कोड्स नहीं लिखने, उसको क्या करना है, फॉर्म का जैसे नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो $frm change underscore name, and here you can define the name of the form. For example, authentication required. Now here post method is preferred, so I am removing these two lines. Now before displaying the form, what I want to do is $frm add field, and in field what field I want to add, name, type text, and field name is username. Okay. Now here what I have to do, I have
to just change here name. Instead of name, it is password. And instead of username, it is password. Some other name here. And type is not text, type is password. And finally we need a submit button. So for submit button, what we require, in caption part we don't want anything. In the name part also we don't want anything. But in type we want submit. Okay. You can give a name also like submit. No. Just save and quit from here. Okay. Now come to the web browser. जैसे ही वेब ब्राउजर पे हमने सेम पेज को ओपन किया, you can see that the form has been executed, and after execution it has created the same appearance which a form will be creating. कोई फॉर्म अगर हम लेते तो उससे जो अपीयरेंस आता करीब करीब वैसा ही अपीयरेंस इससे भी आ रहा है. ठीक है. बेनिफिट क्या है इसको यूज करने का? यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हमने एक क्लास क्रिएट कर दी फॉर्म. अब जितनी जगह पे हमें फॉर्म चाहिए होगा, किसी भी तरीके का फॉर्म चाहिए, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, और उसके अंदर हमें डिफरेंट वैल्यूज को सेटअप कर देना है. ठीक है. बाकी हमें डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा यहाँ फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिजाइनिंग का काम उस क्लास के अंदर ऑलरेडी हमने कर दिया है. ठीक है. अगर डिजाइनिंग करनी है तो वो क्लास के अंदर हम मॉडिफाई कर देंगे. सभी फॉर्म्स के अंदर अगर डिजाइन में कोई चेंज करना है तो वो अप्लाई हो जाएगी. मींस यू हैव एक्सेस टू ऑल फॉर्म्स फ्रॉम वन प्लेस. सो एक जगह पे आप चेंजेस करके सभी फॉर्म्स के अंदर एक बार में एडिटिंग कर सकते हैं. Now let's have the source of the page. So पेज के सोर्स पे जब जाते हैं, यहाँ देखिए आपको वही HTML का फॉर्म मिलता है. You don't find anything different here. ठीक है. बस यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये फॉर्म हमने डिफरेंट HTML टैग्स लिख करके नहीं क्या ओपन किया है. इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमने PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP को इस्तेमाल किया है. That's all for this part of the session. In next part of the session, we'll discuss about how we can use object-oriented programming for communicating with databases.